Hello my dear viewers, welcome to Simplified Civil and Geotechnical Engineering channel. I am Akshay Jaiswal. In this video, I am going to explain rapid sand filters, which are also known as mechanical filters. In this video, we will discuss about construction and various parts of rapid sand filter. So let's start today's lecture. Chapter number 2, Purification of Water, lecture number 25. Now we will discuss about rapid sand filters, which are also known as mechanical sand filters. Point number 1. It was pointed earlier that the slow sand filters can filter water at a very slow rate and thus require huge areas for their installation. यानी स्लो सैंड फिल्टर्स काफ़ी धीमी गति से पानी को फिल्टर करता है, इसीलिए यहाँ स्लो सैंड फिल्टर्स के इंस्टॉलेशन के लिए बड़ा एरिया ज़रूरी होता है. पॉइंट नंबर 2. इन एडिशन टू रिक्वायरिंग ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ फिल्टरिंग मटेरियल, सच फिल्टर्स विल देयरफॉर रिक्वायर ह्यूज स्पेस विच मे प्रूव टू बी वेरी कॉस्टली, पर्टिकुलरली इन कंजेस्टेड सिटीज़ एंड इंडस्ट्रियल टाउन्स. यानी बड़े साइज़ के कारण फिल्टरिंग मटेरियल्स भी बड़ी मात्रा में लगते हैं, जो कंजेस्टेड सिटीज़ और इंडस्ट्रियल टाउन्स में काफ़ी महंगा साबित होता है. पॉइंट नंबर 3. इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस एंड टू इंक्रीज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, अ लॉट ऑफ रिसर्च वॉज कंडक्टेड, फाइनली लीड टू बी डेवलपमेंट ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर्स, which sometimes called as mechanical sand filters. The rapid sand filters are of two types. First one, which utilize comparatively larger size sand particles, which allow greater rate of filtration as compared to that of slow sand filters. They are called rapid gravity filters. यानी जहाँ लार्जर साइज़ के सैंड पार्टिकल्स का यूज़ किया जाता है और जहाँ पर फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा होता है, उन्हें रैपिड ग्रेविटी फिल्टर के नाम से जाना जाता है. सेकंड वन, विच यूटिलाइज द डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर ओवर द फिल्टरिंग वाटर एंड देयर बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन. दे आर कॉल्ड प्रेशर फिल्टर्स. मतलब जहाँ प्रेशर का यूज़ किया जाता है और फिल्ट्रेशन रेट बढ़ाया जाता है, इस फिल्टर को प्रेशर फिल्टर के नाम से जाना जाता है. रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स आर यूज्ड फॉर large municipal supplies, whereas pressure filters, being more handy, may be used for small installations such as for industrial plants and swimming pools. Now let's discuss in detail about rapid gravity filters. These filters employ coarser sand with effective size as 0.5 mm or so on. On an average, these filters may yield as high as 30 times the yield given by the slow sand filters. यानी रैपिड सैंड फिल्टर्स में कोर्सर सैंड यूज़ की जाती है, जहां इफेक्टिव साइज 0.5 mm होता है. स्लो सैंड फिल्टर्स की तुलना में रैपिड सैंड फिल्टर्स 30 गुना ज़्यादा तेज़ी से पानी फिल्टर करते हैं. वाटर फ्रॉम कोगुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक आर यूज्ड इन दिस फिल्टर्स and filtered water is treated with disinfectants so as to obtain potable supplies. यहाँ पर कोगुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक से आने वाले पानी का यूज़ किया जाता है और फिल्टर किए गए पानी पर डिसइंफेक्शन प्रोसेस की जाती है. A typical section of rapid gravity filter is shown in this figure. An isometric view of such a filter is also shown in figure. In this figure, isometric view of a rapid gravity filter is shown. The various parts of this filter are described below. First one is enclosure tank. Point number 1, it consists of an open watertight rectangular tank
made up of masonry or concrete. The depth of tank may vary from 2.5 to 3.5 meter. Point number 2. In order to achieve uniform distribution of water, the area of filter units should not be kept larger and is generally limited to about 10 to 80 मीटर स्क्वायर फॉर ईच यूनिट। यानी पानी को एक समान तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फिल्टर यूनिट्स का एरिया 10 टू 80 मीटर स्क्वायर तक सीमित रखा जाता है। पॉइंट नंबर 3, द नंबर ऑफ यूनिट्स एट अ फिल्टर प्लांट may be roughly estimated by the equation developed by Morel and Wallace, which states that n is equal to 1.22 q, where n is equal to number of filter units and q is equal to plant capacity in million liters per day. Point number 4, there should be at least 2 filter units in any plant, and for a plant of more than 9 million liters per day capacity, no single unit should have capacity greater than 1/4 of the capacity of that plant. Now we will discuss second point, which is filtering media. Point number 1, the filtering media consists of sand layers about 60 to 90 centimeter in depth and placed over gravel support. The effective size D10 of the sand varies from 0.35 to 0.55 mm, and the uniformity coefficient means D60 by D10 generally ranges between 1.3 to 1.7. यानी फिल्टरिंग मीडिया में सैंड के लेयर्स होते हैं जिनकी डेप्थ 60 से 90 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर सैंड का इफेक्टिव साइज D10 0.35 से 0.55 mm तक वेरी होता है और यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट यानी D60 बाई D10 का रेंज 1.3 से 1.7 रखा जाता है। द सैंड मस्ट बी लेड इन लेयर्स। द फाइनर वैरायटी शुड बी यूज्ड टुवर्ड्स द टॉप एंड कोर्सर वैरायटी टुवर्ड्स द बॉटम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बेस मटेरियल। पॉइंट नंबर 1, इन स्लो as well as rapid gravity filters, the base material is gravel and it supports the sand. But in a rapid gravity filter, in addition to supporting the sand, it distributes the wash water. Point number 2, it consists of 60 to 90 centimeter thick gravel of different sizes placed in layers. Point number 3, generally 5 to 6 layers each of 10 to 15 centimeter in depth are used. Point number 4, the coarsest gravel about 40 mm in size is used in the bottommost layer and the finest gravel about 3 mm in size is used in the topmost layer. Point number 5, the size of gravel in the bottommost layer is thus generally kept between 20 to 40 mm and in intermediate layers between 12 to 20 mm and 6 to 12 mm when 2 intermediate layers are used, and in the topmost layer between 3 to 6 mm. Point number 6, in a rapid gravity filter, the distribution of wash water is the critical function of gravel layer, and hence careful grading and equally careful placing of the material is important. यानी रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स में वॉश वाटर का ग्रेवल्स के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूशन करने का रोल काफ़ी अहम होता है, इसीलिए ग्रेडिंग और मटेरियल्स की प्रॉपर प्लेसिंग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। Now we will discuss about under drainage system. Point number 1, in slow sand filters, the under drainage system was provided only to receive and deliver the filtered water, whereas in rapid gravity filters, the under drainage system serves two purposes, which first one is to receive and collect the filtered water and second one is to allow the backwashing for cleaning of filter. यानी
स्लो सैंड फिल्टर्स में अंडर ड्रेनेज सिस्टम का यूज़ सिर्फ फिल्टर्ड वाटर को रिसीव और डिलीवर करने के लिए किया जाता है, लेकिन रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स में अंडर ड्रेनेज सिस्टम को दो अलग अलग फंक्शंस में यूज़ किया जाता है, जिसमें पहला है फिल्टर्ड वाटर को रिसीव और कलेक्ट करना, दूसरा फिल्टर की क्लीनिंग के लिए बैक वॉशिंग को अलाउ करने के लिए। पॉइंट नंबर 2, द अंडर ड्रेनेज सिस्टम शुड देयरफॉर be designed in such a way that in addition to collecting the filtered water, it should be capable of passing the wash water upward at sufficiently high velocity. इसका मतलब है अंडर ड्रेनेज सिस्टम का डिज़ाइन इस प्रकार से किया जाता है कि जहाँ से पानी को डाउनवर्ड फ्लो के दौरान बड़े आसानी से फिल्टर्ड वाटर को कलेक्ट किया जा सके और वॉश वाटर को भी तेज़ गति से अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाया सके। Point number 3, backwashing in fact consists of passing filtered water upward through the filter bed. The grains move through the rising water, rub against each other and are cleaned off deposit. यानी बैकवॉशिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर फिल्टर किया हुआ पानी फिल्टर बेड से होते हुए अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाया जाता है। Point number 4, the backwash water should usually move up at a rate of about 300 to 900 liters per minute per meter square of filter area. Point number 5, a manifold and lateral system type of installation consists of about 40 centimeter diameter manifold pipe running lengthwise along the center of filter bottom. It takes water from the manifold in both directions at right angles to it, would be 10 centimeter diameter laterals. यानी यहाँ पर मैनिफोल्ड एंड लैटरल सिस्टम टाइप का ज़्यादातर इंस्टॉलेशन किया जाता है। यानी यहाँ पर मैनिफोल्ड एंड लैटरल सिस्टम टाइप का ज़्यादातर इंस्टॉलेशन किया जाता है। इसमें 40 सेंटीमीटर डायमीटर का मैनिफोल्ड पाइप टैंक के लंबी साइड को पैरेलल डायरेक्शन में सेंट्रली लगाया जाता है। इसे सबसे निचले सतह पर रखा जाता है, जिसमें लेफ़्ट और राइट साइड के 10 सेंटीमीटर डायमीटर के लैटरल्स से आने वाले पानी को कलेक्ट किया जाता है। Here, plan of a manifold and lateral under drainage system for a rapid gravity filter is shown. The laterals are placed about 15 to 13 centimeter apart as shown in figure. Now we will discuss about perforated pipe type of this system. Point number 1, the lateral drains are provided with holes at bottom side. These holes make an angle of 30 degree with the vertical as shown in figure. In this picture, section of a lateral pipe drain with perforations is shown. Point number 2, the holes are vertical, spaced at about 7.5 to 20 centimeter center to center. Point number 3, placing the openings on the underside laterals requires supporting the laterals on concrete blocks 40 to 50 mm above the filter bottom. Now we will discuss about in-pipe and strainer type of this system. Point number 1, the laterals are attached to the manifold as in above system, but holes are not drilled into the laterals. Point number 2, instead of drilling holes, strainers are placed on the laterals as shown in figure. Pipe and strainer type में laterals पर holes drill नहीं किए जाते, इसकी जगह पर strainers fit किए जाते हैं. In this figure, section of manifold and lateral system in which laterals are provided with strainers is shown. Point number 3, a strainer in its simple form is a simple brass pipe. It is closed at its top by a perforated cap. यानी सिंपल टाइप का स्ट्रेनर एक ब्रास पाइप होता है जिसे ऊपर से परफोरेटेड कैप से क्लोज रखा जाता है. पॉइंट नंबर 4, सच स्ट्रेनर्स आर प्लेस्ड एट
about 15 cm apart on lateral drains. Point number 5. When pipe and strainer system is provided, compressed air is used while backwashing the filter. This results in the saving of the wash water. यानी जब पाइप एंड स्ट्रेनर सिस्टम का यूज़ किया जाता है तब बैक वॉशिंग प्रोसेस में कॉम्प्रेस्ड एयर को यूज़ में लिया जाता है. पॉइंट नंबर 6. While in case of perforated pipe system, the agitation of sand is done by water jet and the backwash is therefore required at high velocity. यानी परफोरेटेड पाइप सिस्टम के केस में क्लीनिंग में वाटर जेट का यूज़ किया जाता है, इसीलिए बैक वॉशिंग के दौरान हाई वेलोसिटी की ज़रूरत होती है. नाउ वी विल सी हाई वेलोसिटी वॉश. पॉइंट नंबर 1. द रेट ऑफ वाटर एप्लीकेशन बीइंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ 600 to 800 लीटर per minute per meter square of filter area. Next one is slow velocity wash. When strainers are used, that is in pipe and strainer system, wash water is required at low rate of about 250 to 300 liters per minute per meter square of filter area, because compressed air helps in agitating the sand particles. The cross-sectional area of central manifold should be about twice the sectional areas of the lateral drains. Our next point is other appurtenances. The most important among them are: first one is wash water through, second one is air compressor, third one is rate controller. These appurtenances are briefly described below. First one, which is wash water through. Point number 1. The dirty wash water which comes out of the filter after cleaning it is collected in wash water through or gutters and is carried to the main gutter. Point number 2. These gutters may be square, V-shape or semicircular in section. They may be constructed of concrete, steel or fiberglass. Concrete through have vertical sides and V-shaped bottom. Point number 3. These through are generally spaced at about 1.5 to 2 meter x distance apart. Water surface during washing is hence maintained as nearly as possible at uniform level. Our next point is air compressor. Point number 1. During backwashing the filter, the sand grains are agitated either by water jet or by compressed air or by mechanical rakes. Point number 2. When compressed air is used, air compressor unit having the required capacity must be installed. Point number 3. Generally, the compressor should be able to supply compressed air for about 4 minutes at a rate about 600 to 800 liters per minute per square meter of filter area. Point number 4. The compressed air is supplied through the laterals. Now we will see rate controller. Point number 1. In order to obtain automatically a uniform rate of filtration irrespective of the head loss through the filters, rate controllers are required to be fitted at the outlet end of each filter unit. The most commonly used type of a controller is a Venturi rate controller, which works on the principle of a Venturi meter. Point number 2. It consists of a balanced disc valve connected to a flexible diaphragm below and to a lever and a weight above. In this figure, simplex rate of flow controller is shown. Point number 1. Besides the above appurtenances, other devices such as head loss indicator, meters for measuring rate of flow, etc. are also needed. Point number 2. A head loss indicator is nothing but a differential type of mercury gauge
one end of which is connected to the water resting on the sand bed and the other end to the effluents coming out of the filters. Point number 3. Meters are installed for measuring discharges at entry and outlet and at backwash. Hope you liked the information given in this video. If you are watching my channel for first time, then click on subscribe and share with all your friends. Thanks for watching. Jai Hind, Vande Mataram.